who are watching us on various platforms. NGO Day is, celebrated on 27th of February every day, every year, and it's a little bit initiative. You can say that an international day dedicated to recognize, celebrate, and honor all non-governmental and non-profit organizations and the people behind them that contribute to the society all around. Back in 2014, on 27th of February, it became a historic day for the NGO community worldwide. The international calendar day, now known as World NGO Day, and it was, inaugurated first time internationally. So, in this way, across the globe, many countries are celebrating this day, and all the NGO people, those who are part of NGO, those who are founders of the NGO, those who are working in NGO, and the people, those who are beneficiaries. So everyone is somehow benefiting through non-profit organizations are celebrating. And I think we should recognize the contribution of non-profit organizations and the non-governmental organizations and the people behind them, especially the founders, the people, those who are working, so that they feel that this is something our day is. And in that context, Social Work Times has started this initiative in collaboration with UP Association of Professional Social Workers, that we should recognize the contribution of non-profit sector. And definitely know that in previous years, and especially during COVID-19 also, NGO played a very important role at every level. They contributed a lot. They helped everyone wherever they were, and they reached out to the beneficiaries, to the people, and helped them in many ways. So in this line today, we have very wonderful panel today with different expertise. So first, in the line, you may see on the screen Dr. Prasun Chatterjee, who is a professor in AIMS Medical College, Medical AIMS New Delhi, and he's also running and founder of NGO called Healthy Aging India, and apart from various other board members of many NGOs. He's also closely working with WHO on aging policy and various elderly issues projects. He's in the geriatric department of the AIMS New Delhi. I know him since some years. He's very, very passionate and dedicated to the welfare of people. And apart from his regular assignments, daily affairs in AIM, you may understand that how AIMS is busy, and that especially the doctors are busy. But apart from that, on Sundays and his holidays, he's trying to help people and running his NGO. So thank you so much, Dr. Prasoon, and Thank you. welcome to this very important panel discussion on this World NGO Day. In the meantime, I just want to introduce the other panelists also. So we have Dr. Suman Khanna Agrawal, who is Associate Professor of Philosophy of Delhi University, former, and now she founded this organization Shanti Sahyog in 1992, and after that she has got a lot of awards. She was a visiting professor in various universities across the globe, and she's wonderful job in terms of peace building and uh, you know different livelihood opportunities, women empowerment, and different skill enhancement programs. So today she's here to share her journey of in the development sector, and how she formed this NGO with a vision. And she recently formed one center for non-violence also, which I am very much impressed, and I feel that in current times this is also somehow very important that we should talk about non-violence. So in this line, another speaker we have Mr. Sunil Watson. He is founder and president of NADA India Foundation. He is a professionally qualified social worker from Jamia Millia Islamia, and he is also the governing board member of NAPSU, is the National Association of Professional Social Workers in India. His contribution to the development sector, he is one of the founder of Navjyoti India
He started as initiated with Dr. Kiran Bedi, and he has a long history of working in development sector, in the NGO sector. So I think he's also one of the ideal person who can be discussed and listen on this very important day. So all those viewers, those who are watching us on LinkedIn and YouTube, so they are thank you so much for joining. And in the first speaking line, I just want to invite the first panelist, Dr. Prasun, because he's a little bit busy also. So Dr. Prasun, over to you, and please share about your journey, that being a doctor of AIMS, how this idea came into your mind that you should work as an NGO and you should start an NGO, and how many colleagues you were having. So over to you, sir. Thank you, Prasanji. Thanks for the opportunity, and I congratulate all of you who are working in social sector. Um, uh, as um, as you already mentioned that I'm a faculty in AIMS, and beyond my duty in hospital as a doctor, teacher, and researcher, I think it is my responsibility also to help people in the society who cannot reach AIMS like institute. Uh, I'm a geriatrician. That means elderly care physician. I take care of elderly people in hospital. But way back in 2010, we few doctors from AIMS, few of my colleagues from IIT and other reputed institute, we thought that elderly people, especially those who are vulnerable, those who are 80 plus, 90 plus, from underprivileged society, they cannot reach to AIMS hospital, and for them, practicing active aging through knowledge, through evidence-based practice, through support is possible. So we our target population to help is like those who are staying in various old age home. We provide them health care, and this healthcare includes primordial prevention, primary prevention, like giving them vaccination. Even recently we have organized one event in Rajghat. We gave COVID vaccine those who were left out. Government was very rigorous to inoculate vaccine for elderly people this time for COVID, but still few left out, and we tried to found them and then brought them and gave vaccination. Similarly, we provide them, we take care of their various non-communicable diseases like hypertension, diabetes, coronary arteries. So one mobile unit. Initially, we started with scattered visit, but then we did a survey to understand what is their actual problem. So most of the NGO and old age homes are their health situation is not great. There is no proper planning strategy to give them primary health care at doorstep. So we tried to fill that gap. At present, we are catering nearing 19 old age home and nearing 1,500 elderly people. Provide one doctor, one physiotherapist, a nurse is visiting every day one old age home, giving them health care, giving them free medicine for 1 month, as well as who need physiotherapy, we are giving physiotherapy, and who needs tertiary care, we are referring them to AIMS or any other tertiary care hospital. Of late, we have started a old age home of ours, because I thought we should have an ideal prototype of old age home where people can have practice and achieve active aging, what we called. So it is in Bharat Sevastram Sangh, very close to in South Delhi. It's a Srinivaspuri, so within a temple campus, there is a old age home. One more project we are working, those who are capable, those who have a capacity, those who are literate elderly people who are staying at home, there is no work for them, we are engaging them to teach underprivileged children. It was face to face before COVID, but during COVID we have made this digitize that. But again, we are going back to face training. This program is going on in Noida, Delhi, and Ranchi. We did some other project also, like livelihood mission, menstrual hygiene project, because it's all health related project, but primarily two things. One is who are elderly people who wants to contribute to the society, we connect them to teach underprivileged children, and those who are totally dependent, we want to support them through holistic healthcare. And during COVID crisis also, we didn't stop. Our team continued to support old age home elderly people, both for healthcare, food, nutrition, and including oxygen concentrator. Just like many other NGO, we
We continued our service in 2020, 2021, and I thank all my team member, especially doctor, physiotherapist, who continue even during this COVID crisis. I myself also visited. I suffered twice COVID for the same. Once I contacted that in AIMS, once in the community to serve people. But by grace of God, and I'm still fine. So service has to be imbibed in everybody's practice, whatever may be your profession. You may not start a NGO, but I think COVID crisis has taught us that we have to be empathetic. We have to live for each other. We will only survive if all of us survive. It's not a planet isolated fragmented area where your house is that you will survive, the next house is dying. It's not possible. That COVID has taught us very clearly. So this is high time for all of us, those who are listener, those who irrespective of your profession, you may do anything, but do a little bit more for the society. At least be thoughtful for your neighbors, be empathetic, be sympathetic to the next people, and especially those who are vulnerable, because we need each other, and we have to survive together. Thank you. Thanks for the opportunity. I wish all Yeah. the best Yeah, to so all. thank you so much, Dr. Prasun. There's one more thing I just want to know. Like in previous last 2 years, if we see the COVID era, so in this definitely elderly issues, have come up in a very serious way, and definitely NGOs' contribution was very appreciating in that manner in mental health issues, maybe of elderly people, or maybe providing them some basic other support. So, in that line, can you just tell one more thing that the kind of policies we have in India right now? Do you think that NGOs can be given some more, in terms of the kind of legislations or the FCRA and different things amendments are happening? So, in this way, you want to say anything in that line? Yeah, we have policy called National Program for the Healthcare of the Elderly. So those Hmm. who are interested to work with elderly people, you must know the policy. You must read detail. Two ministry work directly with elderly healthcare primarily. One is Ministry of Health, another is Ministry of Social Justice. So you can go through their portal. You can try for government funding, government cooperation. Niti Aayog also work closely with elderly people. There is a division in elderly care where we and HelpAge India are two members who are taking care. We can be your collaborative partner for the same. Regarding World Health Organization, this whole decade, 2020 to 2030, World Health UN has declared as decade of healthy aging. So even WHO will support many program, and we want to listen from the voice of the elderly people, what they need, how they want to enjoy healthy aging. And there are a few priority area. One is like, we have to see that elderly people who are near you, he or she may be your relative, he or she may not be your relative, maybe in the park you may visit. We should proactively promote functional ability of them. They should be independent, they should be mobile, they should be they should be interacting with you, they should learn something new things. The model I explained just now, IGLC, intergenerational learning, is one form of lifelong learning process. One senior citizen are learning, their participatory, they have the capacity to take decision, and they have the capacity to build relation and maintain, they are definitely fine. So we should promote, all of us should promote that. We should generate more evidence by listening to their voice, actually what they want. So they have to come out with their suggestion to the government that, look, we want this. Definitely health access is their right, so they should get it. Unfortunately, I'll not say it is a very satisfactory still now in this country, but yes, government is working. There are multiple wellness center which is getting started in many places. And of course, WHO promote, even government of India is also interested on multi-sectorial collaborative approach, where NGO, non-for-profit organization, foundation, private partners, government, startup company, all of them can come together, and like, it's more of approach has to be multi-sectorial, concerted, collaborative approach, because it is not a, no one single man can solve all the problem. So we have to try connecting the dots instead of creating the
whole system, which is impossible. And one more concept is like aging in place. So we have to promote that wherever the senior citizen are there, we should support them. Someone is alone at home, you support them. Someone is staying in village, you try to support them. And supporting does not require always money, and but yes, you have to spend some time, where I think young generation can come and do the great job interacting, especially during COVID crisis. Social isolation is a major issue for elderly people. So if young generation are connecting with elderly people, so if you give this job to your student, Prasanji, I can say that they have to contact every day 10 senior citizen. I'll give them a lot of number, and just to chat with them. I think that is also a great job, and understand how they are doing. Right, this is a very simple thing, but this also never happened, because isolation does not mean that you are staying alone. It's like you are not connected with your environment, which, so someone who is staying with the family, even he or she can be socially isolated or depressed. That we have to prevent. So thank you. Correct, correct. Thank you so much. I think, and definitely, students, youth can play very important role, because they are the one who can be a supportive hand, and definitely NGO needs volunteers. So we'll discuss on the volunteerism and the NGO link also, and in the coming. So I will request you be here if there is any question or something, and then. Thank you so much. So now I'm moving to Sunil Watson ji, who is has a long career in this sector, and I think many NGOs he started and initiated, developed, and collaborated, and many things he has done in this sector. So Sunil ji is, as I said earlier, is a professionally qualified social worker, MSW from Jamia, and he opted to work with the non-profit sector, development sector. So in I know him like from my many years. So Sunil ji, over to you, and please share your journey, that how you started the NGO, and what is your view on this day. Over to you. Uh, Thank you, Dr. Prashant, and my co-panelist, Dr. Prasun and Dr. Suman, for being sharing the panel as well as the stage with you people. Uh, as far as like NGO is concerned, certainly I have some reservations about word use of the word NGO. That means non-governmental organization. It is something to do with the. It means you are non. It is just like my name is Sunil Watson, and Mr. Chauhan become non Sunil Watson. So it should not be the same case. The best word which define our work is voluntary organization, or so to say the civil society organizations. But since it has been NGO has been generated or coined by the you can say uh, by the United Nations, because United Nations was a sort of a collective of collection of all the uh, government bodies of different countries together. So naturally, other stakeholder or other people they become part of the non something. But apart from there, like my journey, certainly since I was in, uh, I was studied in social work. I found that was a time when nobody was taking like going into as a career for social work, especially the male member, because you are a bread earner. It means you have to have a balance between voluntary sector as well as what you have been doing. So it was in 1987 when I joined. So as far as Navjyoti Delhi Police Foundation for Correction, De-Addiction and Center. So that was my, you can say, what I found over there working with Dr. Kiran Bedi. There is always, if there is a government servant like Dr. Prasun is there, Dr. Suman is there. So each profile or like the kind of work we have been doing as a part of our job is always limiting ourselves.
And whenever you feel like that you want to go and your intervention needs more than what you have been doing, like you are a you are a professor and you feel like doing, you want to be a practitioner also. So naturally you need some more space and structure. I think voluntary organization creating a space for yourself as well as for others to reach out to those is can be one of the way of reaching out to satisfying your own volunteers. So each police officer, whether it's a doctor, professional, or anybody, there is always be a hidden volunteer. You want to do something out of your box because you find yourself that I'm in a box and I'm unable to do something beyond my duties which have been assigned as a part of formal, whether I'm a bureaucrat or otherwise. So you can always expand yourself and do whatever you want to do. Still, only thing is that you are not getting a pay out of it because it's a non-profit and you are not. So you're a volunteer over there. So all the people who think that what they want to do, they can always come together. Like seven people is are required in any of the to start your own venture, formally or informally by registering yourself. But the important thing is the voluntary sector is one of the many like five pillars which Vinoba Bhaveji has already said. The voluntary sector has to be there not to supplement the government. It is not replacing the government because we are living in a welfare state. The welfare state, you need to have the government become a first service provider, like Dr. Prasun has already said, like a Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Health, or other ministries who are directly concerned. They are going to provide services to the needy. But we need more creative ways to reach out to more people. We need more so the professionals like you and others, those who see a gap between the service delivery or welfare schemes, certainly we can always pitch in and do our pilot, come up with our projects and run it. So it is. I never see saw if we, the voluntary or an NGO as a one of the. It can't be your career or something. It has to be go with you have your own livelihood. You are already working somewhere. You are satisfied with your own needs, but you think that you want to do something as a something which you can offer something, your time, energy, skill, and certainly NGO or the volunteer organization becomes your platform to execute your dreams. You can always work for your dreams and you can involve people who are similar uh, thinking and similar something which is you there is a common which brings all the people together. So certainly, and since it has become a very skilled job, the social work as such. So you need some education also in this, and education like MAT, Delhi School of Social Work, Jamia School of Social Work, and more than 500 schools of social work already running, like providing these services, training in skill as a skill job, as a skill where you can work with the voluntary sector. So certainly this is area and where it is challenging because you are at your own, you have a freedom, but certainly you need some sort of a direction to take it further. And the policies of the government as well as policies and the needs and the wants of the common people, how they can match, because the voluntary sector is supposed to have a direct linkages with the common people. We have been Nada India has been like when you ask me for my journey, why Nada India?
In 2000, I found there was a lot of recovering addicts who have that, who have been working with, who have like already been drug free for many years, but they never had a sort of a, as a occupation what they can always do. So they always find themselves that the only thing which they can do is they can treat others or they can rehabilitate others. So that was the point where I thought bringing all these recovering addicts together uh, under one umbrella, that is, we come up with a project called ARPAN, Association of Recovering People Action Network, where these people and they they never had their own voice, because we always think that addict is an addict and he is a criminal because or he has done some he has committed some crime. So that was like that social aspect of it, because it becomes his identity. That is which can't be like for addict. Uh, uh, if it becomes a sort of identity, then your whole thing become more difficult. So our purpose is to how they can be accepted as such, as a common man, because they are not problem. They are the people who are living with the problem, like people living with addiction, not problem themselves. So once we start, because of these, this is a social problem, and we found that drugs, alcohol, tobacco, they are all risk factors for non-communicable disease. So we started working in a more holistic way rather than keeping the things. And we found like young youth is a target of tobacco industry, youth is a target of alcohol industry, and youth is a target of illicit drugs or any other drugs which have been available. Even food has food industry, they always see the young people as a target. So we started working with the young people, and how the best thing is because involving young people is also drug prevention. So once you not only involve and you get into more in their decision making process, certainly they see their own stake and they found their own way out. And we never say that uh, this is your like youth is a future. I always say that youth is today, youth is yesterday, because they might not be knowing everything, but they know whatever they know is good enough to take along with them and be with them. Okay, thank you. Hmm. Very nice. I think whatever you have said actually is very important in current times, and because you have that experience, of at every level. When I say, because you are already a social work professional, and then afterwards, you have that from basics, how to organize or how to start an NGO. Sunilji, I just want to ask you one here in the when you finish, and then Mhm. I'll to Sumanji, that this is a time where NGOs are, you know booming actually. When I say that, a lot of students, when I see, though, they have a vision that I will start organization or social startups, or startup India, many things are happening. So in that context, do you want to say anything in between, and then we'll have the question and answer, that is there anything where youth should take the as a founder of the organization in the starting, or they should first have experience, or in terms of livelihood and the certain responsibility as you were discussing? So what is the, your take, or what is your message on this? No, one thing is very clear that establishing any establishment, or in a sense like any venture, that itself takes away your lot of energy, and you drain out with the whole thing, because initiating any venture is a very easy one. Like we usually say for addiction,
you can always start. It is easy to leave drugs, but being drug free is the most difficult part, because each day you need to work for yourself. So is the voluntary sector. You can start an NGO, you can start at any point of time, but maintaining and running it, because now it is highly in you need a lot of resources to run it, and you need more volunteers. So there is no I should not use the word that there is a like a booming of so much of NGOs. We need a lot of NGO because there is a demand for it. So there is a demand. That's why so many people are thinking that there is a one way of looking at the whole thing, and I want to do my own way. And voluntary sector gives you this that is space where you have your autonomy and you can think in terms of the way you want. So if that is your the whole purpose, then don't need much of the money. What you need is you need to work, because once you go into a service delivery, then you need money each day and you have to work for it. So this is not something that it is so easy to start with it, but it is. But I will appreciate if you want to do something, you can always join others ventures, others platform first for some time, for more than, so that you get a more, the holistic idea of and the in and out of the any venture. Because it is just like running a NGO means you are running a social enterprise. So it's an enterprise because there are so many people whom you are involving and getting the work done. So naturally you need, and you need to be more skilled in your project management. You need to deliver, having campaign planning and campaign delivery. So there are so many, now it has become a very science itself. So if you go in much deeper and deeper, so it means it is a full-time job, or it is a full-time work. If you have time, if you have energy, and certainly if you have for another 10 years money to survive, certainly voluntary sector is all for you. Otherwise you will always be in a a very sorry figure where you are you may be complaining about the system, you may be complaining about the government, you may be complaining about things are not working. So you need a preparation, but you have to think in terms of your own vision and what exactly what government can't do, what others can't do. Then you may think that there is something which you can do. Yeah, thank you so much. Thank you so much, and we'll see if there are some questions, and we'll take up it at the end. So now I'm moving to Dr. Suman Khanna ji, Agrawal ji. She's founder of Shanti Sahayog NGO, and is also educator from Delhi University. And since some past few months, I know her, and she is the kind of passion she has, and the kind of willingness to work for the society. So I am very much impressed by her. Our students also working under her, in field work. So the way she is mentoring and guiding, and giving opportunity to the students is also very extremely very nice. So on this day, Sumanji, first of all, I would like to salute you that being an educator after your second inning, you are so much passionately, working in this sector, and helping everyone. Day wise, you have plan, and you are, doing many things. So today, I just want to, ask you, because everyone, those who are watching us on LinkedIn Live, and also on YouTube, we are live, but the two platforms we are live. So in this way, can you just share that how this thought of this Shanti Sayog came into your mind? Because I can say that when in 90s you started this, though that peace and Shanti thing was little bit is important every day, but I think slowly gradually the meaning of this piece is very important, and it is increasing.
So just share your journey and tell us about our viewers that how you have started, and on this day, what is your vision further, and how you want to collaborate, cooperate, how you want to work for the society more. Over to you, Sumanji. Uh, Thank you, Prashant ji, for this opportunity of sharing, my journey with everyone here present. So let me begin at the very beginning. After my PhD on Gandhi, I did 3 postdoctoral research projects, one in Delhi, one in Sweden, and one in Canada. In Sweden, the subject of my research was Gandhi's relevance to the peace movement in Scandinavia. So to cut a long story short, I met lots of peace movements, and ultimately there was one peace group in Stockholm. It was called Cooperation for Peace. So they asked me that, can we collaborate with you in India? They were organizing peace quest tours, like sending Swedish students to India to see, different aspects of Gandhi's ashrams, etc., like a peace quest tour. So that is how it is so strange, that so cooperation for peace translates as Shanti Sahyog. No? Cooperation is peace is Shanti and cooperation is Sahyog. So if you notice, our NGO is actually Shanti Sahyog in brackets Cooperation for Peace India. So we started out as a peace NGO, and Shanti Sahyog is the universe gave us this name. It's a translation actually. So that is how we started, and we did a lot of work till 2004, right from 1992. We organized peace quest tours. We introduced the concept of peace games in schools, Gandhi clubs in schools, and inter-school, debate on Gandhi every year, etc. A lot of work, a lot of work. In fact, we also sent the children, the students who made peace games, with all the peace games to the International Peace Games Festival. At first, it was in Connecticut, then it shifted to Harvard, because the founder of Peace Games, Professor Francilia Butler, from whom I learnt this whole thing. I was lecturing in Connecticut at that time. So she passed away, then it shifted to Harvard. Now that was, my peace journey, so to say. Then suddenly in 2004, I started the community service wing of Shanti Sahyog. So Shanti Sahyog NGO was actually born in 2004, because the community service wing started. And it's very interesting. I feel it was a call from the universe. And let me share this. There was a colonel in the army I met, Colonel Malhotra. So he was a very good friend, and he once told me that आप इतने lecture देती हो, इतना कुछ बोलती हो गांधी के बारे, poverty is the worst form of violence, ये, लेकिन आपने कुछ किया क्या है आपने? तो मुझे लगा कि मैंने क्या करना है, मैं तो एक स्कॉलर हूँ, मेरा किताबें लिखूंगी. I've written 3 books and lots of articles. My work is peace research, writing articles, giving lectures, teaching graded courses in foreign universities on Gandhi abroad. I don't have to do grassroots work. Anyway, थोड़ा मुझे लगा भी कि भाई, because he said poverty is the worst form of violence. आप ये कहती रहती हैं, हम तो सुन के थक गए. आपने किया क्या है? Then my husband, he's an architect. He also works for the World Bank. So just that, ये Colonel साहब ने ये बात कही, and then my husband, he had come back from a World Bank assignment, and he brought me a beautiful gilded quotes की book गांधी की. And by chance वो जो bookmark था ना, वो एक पेज पे था. तो जब मैंने उसको खोला, उसमें लिखा हुआ था, the quote was, an ounce of practice is better than a ton of theory. तो मुझे लगा ये क्या हुआ, मैं तो थियरी ही करती रह गई जिंदगी भर. So what about an ounce of practice? तो then I felt the universe is telling me, तो कुछ तो काम करो गरीबों के लिए. तो I never thought I would do so much social work, never. मैंने शुरू में, since I was a teenager, मैंने सोचा हुआ था जब पैसे होंगे मैं 25 लड़कियों, गरीब लड़कियों को स्कूल में जरूर पढ़ाऊंगी 12वीं तक. That was a vision I had always had, So then I thought in 2004, ये तो time आ गया. Luckily, my husband was very cooperative. He gave me 50,000 rupees to start all this, and he gave me his office, a flat in B block, Kalka ji. तो बाहर का कमरा हम लोगों ने ऑफिस बनाया, पीछे रेंट आया 7,000 रुपया महीना in 2004. With that, I kept one girl, Nivedita, and we worked together. And then of course we did not pay my husband for 2-3 years any rent and all. We made him our patron, क्योंकि हर चीज के लिए पैसे चाहिए होते हैं सुनील जी, आपको पता ही है. फोटो कॉपी कराओ, कुरियर कराओ, फैक्स होती थी तब, तो वो कराओ. So we used his office and we made him our patron. लेकिन
वो कहते हैं ना कि कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, and in about the bottom line is कि we should started out with 50,000 rupees and today our budget is 1 crore. खैर अब कोरोना की वजह से 80 lakh हो गया annual budget हम लोग का, and now we run we have expanded so much. I employ 30 people, 35 actually. We pay salaries on the first Friday of the month, बड़ा streamline हो गया है. And so now, I don't agree with Sunil ji यहाँ पर कि कि विजन बहुत जरूरी है फाउंडर को. फाउंडर चलाएगा और विजन नहीं होगा तो कभी नहीं चलेगा. So like I did not need money, so I never took a पैसा from शांति से योग. लेकिन I also realized very soon कि एक कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे हम लोग 4 जगह, इट्स अ होलिस्टिक एनजीओ, गांधीयन है ना, तो we work in healthcare, education, very big thing in education, many types of education, adult education, non-formal education, primary, kindergarten education, primary and secondary. Then also we have skill development. We teach computers, cutting and tailoring, beauty culture. Then we have 2 centers for women. It is for domestic violence victims. In everything, one in Kalkaji, one in Tughlakabad village. तो जहाँ के डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स को हम लोग लीगल काउंसलिंग वगैरह, एड, अवेयरनेस, काउंसलिंग, एड एंड रिहैबिलिटेशन करते हैं. लेकिन मुझे बड़ी जल्दी पता लग गया था कि वॉलंटियर के बेसिस पे प्रोजेक्ट नहीं चल सकता. हाँ, जो आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो जरूर होंगे जो वेल सेटल्ड होंगे, जिनको पैसे की जरूरत नहीं, जैसे मुझे नहीं थी. आपको पता है 7th पे कमीशन के बाद कैरी होम सैलरी 1.5 लाख हो गई थी प्रोफेसर की, तो क्या जरूरत थी पैसे की. So I mean, I didn't start this NGO to make money, not at all. I wanted to help people. Yeah, I wanted to obey a call from the universe कि poverty is the worst form of violence. Let me do something about it. Then I very soon realized, क्योंकि NSS के volunteers आते थे लेडी श्री राम कॉलेज से. We are based in कालकाजी. जामिया से इंटर्न्स आते हैं सोशल वर्क के, IIT से इंटर्न्स आते हैं, ग्रीनफील्ड स्कूल बच्चों के लिए भी मैंडेटरी था. क्लास 11 दे कुड नॉट गो टू क्लास 12 विदाउट डूइंग 30 hours of social work. बहुत लोग आते थे, बट वॉलंटियर के बेसिस पे आप सस्टेन्ड प्रोजेक्ट नहीं चला सकते, बिल्कुल भी नहीं. हाँ, दे आर वेरी गुड, दे हैव अ लॉट ऑफ आइडियलिज्म, अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म. जैसे कभी एमिटी से आए हुए 4 बच्चे आए थे पीछे, नाउ अगेन दे आर गोइंग टू कम. दे आर रियली गुड and very good, and they're so knowledgeable. आजकल के बच्चों को कितना कुछ मालूम है, सोशल मीडिया, ये वो, बहुत ज्यादा. I mean, I must say, but you can't run a program on volunteers, not at all. So I feel the time has come, because through CSR funding, you have to give employment, and good employment, maybe not on par with the public sector, or I mean, a package nahi ho sakta 10 lakh ka, whatever, but you have to pay them 30,000-40,000 a month, so that they can because उनकी तो जिंदगी शुरू हो रही है ना, तो उनसे तो इट्स सो अनफेयर. उनसे हम कैसे वॉलंटियरिंग करा सकते हैं? चलो, जो NSS वॉलंटियर कर देगा 120 घंटे, देन व्हाट? दे हैव देयर करियर्स टू बिल्ड, दे हैव टू मेक देयर लाइव्स. सो इट्स वेरी वेरी अनफेयर. So that is my personal experience. So that is why we started employing, and we continue to employ, and it's more or less as I told you, हमारे NGO में जो भी आता है वो जाता ही नहीं, because I think it's one of the few NGOs. Even in COVID times we paid salaries. We gave a 10% cut, but otherwise we paid salaries and everything. And जैसे मैंने आपको कहा ना, स्ट्रीमलाइन कर दिया. फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ स्टाफ मीटिंग होती है, उसके बाद अपना सैलरी चेक लो और साइन करो, रजिस्टर. सो पीपल आर सो हैप्पी, दे गेट their salary checks. So and I think the time has come when it should be taken up as a profession, and we should pay even more. So CSR funding और हो ही रही है, बट इसको एक्सेस करना वगैरह, और गवर्नमेंट फंडिंग भी हम लोग एक्सेस करते हैं. वी आर सपोर्टेड बाय द Australian government, we are supported by Delhi government, Ministry of Minority Affairs, Ansal API, corporates, all sorts of ONGC, SAIL, IOC, individuals, foreigners, NRIs. और मेरा तो ये तजर्बा है that people want to give money, they only want कि वो अंडर प्रिविलेज या बेनिफिशियरी के पास पहुंचे. एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, देन मनी कम्स. मेरा हाथ तो कभी पैसे की वजह से नहीं रुका. I'm God's grace. It has gone on and on. Volunteers have come, and so many of them. For example, Avibi Amity ki ek ladki, she is very, very good, Mayuri. And so now, she's also with us now. So, I mean, so that way. So I think it has to be
I request Prashant sir that you should encourage the social work students, because there are a lot of students who are very idealistic कि वो ये इसको pursue करें करियर की तरह, और मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए उनको अच्छे पैकेजेस दें, बिकॉज डेडिकेशन तो है ही. अरे भाई वो तो बच्चा है ना, आई मीन बच्चा इन द सेंस की टीनेजर 20-25 years old, आई मीन दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन लाइफ. सो देयर आई डिसएग्री विद सुनील जी कि वॉलंटियर फाउंडर मेंबर ठीक है, आपको नहीं जरूरत है जी पैसे की. अब आज कोई 20,000 रुपया मुझे दे भी मैंने क्या करना. आई एम ईटिंग वन रोटी, यू नो, ट्राइंग डोंट वांट टू ईट आउट एनी मोर, you know, so many things, we are in that same boat. So there I sort of disagree, and I would just like to say here another thing. I mean, also I work on the principle that it is much better to light a candle in the dark than curse the darkness. And number two, I think we have to empower, because I feel so disempowered sometimes कि क्या करें कहाँ करें. So then I think, and then other people are even more disempowered. So the whole idea is to empower people. तो जिन लोग को हम नौकरी भी देते हैं, we purposely select people who are disabled, who are really in need. कोई widow है, single mom है, you know, जानबूझ कर, and then we train them on the job, because the whole idea is women empowerment, you know. And then I must say that they pick up and they really do well. So I think along with the pay package, बहुत सी चीज़ें होती है, इमोशनली आप उनके साथ इन्वॉल्व रहें, बहुत कुछ करें एंड ऑल दैट. तो having said that, I must say that there's no looking back. Then suddenly 2004 से शुरू करके अब हमारे तो इतने सेंटर्स वगैरह हैं. It is you know, and then I revived my Shanti Sewa Peace NGO just recently in 2018. We called it the Center for Non-Violence, because मुझे अब ये भी लग रहा है, क्योंकि अगर गांधी जी का talisman आपने पढ़ा ही होगा कि वहाँ what it is written ना कि when your ego becomes too much with you, think of the hungriest and poorest person you have seen and contemplate कि how you can help that person, you know. So उसको आप लीजिए. तो अगर गांधी जी का वो जो भूखा नंगा इंसान है उसके लिए आपने कुछ करना है, so then दूसरी तरफ जो डिफेंस का बजट है, it is $3.8 million per minute and 18,000 children dying every day. तो मुझे लगा कि एक नॉन वायलेंट डिफेंस पे भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिकॉज इतना पैसा हम क्यों खर्च कर रहे हैं. एंड नॉन वायलेंट डिफेंस, एज प्रशांत जी ऑल्सो नोज, कि इट्स अ कॉन्क्रीट रियलिटी. मैं तो ये पीस रिसर्चर्स के साथ 25 साल हो गए पीस रिसर्च करते. 25 साल से लोग मैं तो सिर्फ गांधी एक्सपर्ट हूँ, नॉन वायलेंट डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं. देयर इज अ ब्लूप्रिंट फॉर नॉन वायलेंट डिफेंस. ऑल वी नीड इज द पॉलिटिकल विल टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस. अब बताइए ना, इफ हाफ द टैक्स पेयर साइन अप फॉर नॉन वायलेंट डिफेंस, ये $3.5 million अ मिनट, आधा पैसा आ जाएगा. आपकी नॉन वायलेंस अकेडमी आप सेटअप करेंगे. यू हैव टू लर्न नॉन वायलेंस. जैसे गांधी जी कहते हैं कि नॉन वायलेंस इज अ साइंस. साइंस का मतलब इट इज अ डेफिनेट सब्जेक्ट मैटर. It has to be learned, and then only it can be applied and solve problems. So this is the basis of our, you know, the non-violent defense, this thing. And so I must say it is also going on. Prashant ji has been, a lot of people have been very supportive, I must say. So the whole idea is to spread this thing, because after all, ये सारा पैसा development में जाएगा ना जी. अभी पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. हमारा एक पूरा एक टेबल बनी हुई है. Using a quarter of the defense military expenditure, you can solve all the problems facing humankind today. You know, ozone layer depletion, water harvesting, acid rain, deforestation, clean drinking water, etc., population, all that. So that can be solved. So I think we need to also think out of the box. And why kill? मैं यहाँ सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि भाई आप देखिए, एक तरह से गांधी जी के साथ मैं एग्री करती हूँ that we have evolved as a human race. Let's be positive. For example, you see, equality is now in our consciousness. United Nations Convention of Human Rights में, you know, we are all equal. जैसे ये चल अब जहन में तो है ना. ये आजकल आपकी मेड भी कहती है मैं क्यों करूँ ये काम, you know, मैं क्यों ना छुट्टी लूँ. Very good. How nice, how good. She's aware of her rights. It's a very good thing. So I think this gender equality ले लीजिए. Today, I don't think Prashant ji can get up and say, मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ कि भी मैं सुमन जी से सुपीरियर हूँ क्योंकि मैं एक आदमी हूँ. वो जमाने लग गए. सो एटलीस्ट जेंडर इक्वालिटी, चलिए अभी भी बहुत कुछ होना है, बट कॉन्शियसनेस में तो आ गया. वैसे ही ये कॉन्शियसनेस आ जाए ना, व्हाई शुड वी किल, व्हाई किल, एंड देन व्हाई आर वी किलिंग, हुम आर वी किलिंग. कल वॉर होती है तो मोदी जी थोड़ी ना जाएंगे मरने.
Who will die? My brother, my father, my, my son, whatever, So we are used as cannon fodder वगैरह. चलिए ये I just want to finish by saying one or two things about the government, क्योंकि आपने कहा ना थोड़ा उसका. ये जी हमारे अड़चन कहाँ आती है? ये जो गवर्नमेंट की फ्रीबीज हैं, इसने सत्यानाश कर रखा है जनरल पब्लिक का. दे आर सो यूज्ड टू फ्रीबीज. इट्स टेरेबल, रियली टेरेबल. एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ. जैसे हम लोग जेंडर रिसोर्स सेंटर हमने चलाया, शीला दीक्षित का प्रोजेक्ट था, दिल्ली गवर्नमेंट का. 7 साल हमने चलाया. वी गॉट 20 lakhs a year for that. Another 7 lakhs for आवाज उठाओ program, which was part of that sexual harassment का. Another 19 lakhs for night shelters, etc. अब ये वाला जो प्रोग्राम था, इसमें एक ही खराबी थी, and that it was totally free. I was in fact the NGO representative on Shield's team. तो मैं इनसे हमेशा कहती थी, मैम आप 50 रुपया महीना लो ना, कुछ तो लो. और हमारे 3 प्री स्कूल्स हैं, हम 200 रुपया महीना लेते हैं. देखिए जी, देर आर 2 थिंग्स. ये मेरा विचार है, आई डोंट नो हाउ एवरीबडी एल्स थिंक्स. नंबर 1, इट एड्स वैल्यू. कोई भी चीज फ्री हो तो वैल्यू नहीं रहती. 200 रुपया महीना ही तो है. कंप्यूटर में भी हम लोग 300 रुपया महीना लेते हैं, बाहर बेसिक का 1500 लेते हैं लोग. खैर एनीवे, एंड देन नंबर 2, इट गिव्स डिग्निटी टू द अदर. भाई वो जो गरीब है वो सोचता है मैं 200 रुपया दे के अपना बच्चा पढ़ा रहा हूँ. एक गरीब से स्टूडेंट है, 300 रुपया देकर मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ. सो मुझे लगता है कि जो फ्री बीज का कैसे टैकल करें, शायद प्रशांत जी बता पाएंगे. हाउ टू स्टॉप दिस कल्चर ऑफ फ्री बीज. इट इज रियली टेरेबल. एंड देन ऑल्सो इट्स लीड्स टू अ वेरी पुअर एथिक्स. जस्ट एक और उदाहरण, क्योंकि ऑन द ग्राउंड ये कठिनाइयाँ आती हैं. अब जैसे हम लोग लीगल अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, उसके लिए हमारे पास पैसा है, ठीक है जी. देन नॉट ओनली दैट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने हमें दिए हमें 5.5 लाख लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन. आप यकीन मानिए, वो औरतें सब 125 औरतों का ग्रुप था, 25-25 फॉर 5 वीक्स. वो 25 औरतें इसलिए आती थी, मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर कर रही हूँ ऑनेस्टली. ये नहीं है कि उनको फायदा नहीं हो, कुछ लोगों को तो बहुत फायदा हुआ. कुछ का डिवोर्स का प्रॉब्लम था, दे गॉट टू नो अबाउट देयर लीगल राइट्स एंड ऑल दैट, व्हाटएवर. बट अगर हम उनको फ्री लंच ना देते और चाय के टाइम सेकंड हाफ में समोसा और बर्फी ना देते, वो कभी ना आती. दिस इज अ हार्ड फैक्ट. इलीगल अवेयरनेस कैंप में भी हम रिफ्रेशमेंट देते हैं, तब वो सब औरतें आती हैं. हाँ, ये जरूर है. उसके बाद दे कम आउट विद देयर केसेस एंड देन वी हेल्प देम एंड ग्रेजुअली, एंड वन लास्ट थिंग, जो आई डोंट नो हाउ प्रशांत जी और ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम. जो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स हैं, वो हमारे तक तो आ जाती हैं, लेकिन वो बिल्कुल, उनको इतना डर लगता है कि हम अपनी आवाज़ कैसे उठाएं. अगर हम बता देंगे अपने हस्बैंड के बारे या ससुर के बारे या इन लॉज या जो भी वायलेंस कर रहा है, तो उनको पता लग जाएगा, तो हम तो मर ही जाएंगे. तो ये इनको एम्पावर करना बहुत मुश्किल है. लीगल अवेयरनेस हम करते हैं, उसके बाद हम वी आर इवन वी हैव अ फ्री काउंसलिंग, वी हैव अ फ्री इवन, अरे केस भी हम लड़ते हैं फ्री, लेकिन वो जाने को तैयार ही नहीं. क्या कहेंगे लोग, पता लग जाएगा, मुझे और मार पड़ेगी, अभी तो और पैसे नहीं देता, तब बिल्कुल नहीं देगा. इतना ज्यादा फियर है. अब पता नहीं, शायद प्रशांत जी और सुनील जी बता सकें कि प्लीज आइए काउंसलिंग कीजिए, बताइए हमें, मेरे काउंसलर्स को बताइए क्या कैसे डील करें इस प्रॉब्लम के साथ. They don't want to be helped. They just don't want to be helped. How to do it? आप किसी, so anyway, I've just said a few things, and I must say कि जो volunteers आते हैं वो तो सोने पे सुहागा है. आपका project चल रहा है, they add value to your project, but you have to have paid employees. Without paid employees, हाँ, selection उनकी करो जिनका उस तरफ रुझाव है, डेडिकेशन है, उनमें के मन में दर्द है, एम्पैथी है. लेकिन बिना पैसे दिए आपका प्रोजेक्ट एटलीस्ट हमारा तो नहीं चल सकता, जितना भी हमारा आज तक है. सो आई मे बी आई जस्ट रैम्बल्ड ऑन. करेक्ट. नहीं, आपने बहुत ही, आई थिंक, जो बात रखी है, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वॉलंटियरिज्म की बात जो आई है, मैं उससे शुरू करूंगा, फ्री बीज पे भी डिस्कस करेंगे. देखिए, जो वॉलंटियरिज्म का कॉन्सेप्ट है कि कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट सेक्टर में, ये तो आप मानेंगी कि कुछ एक अंदर से एक समाज सेवा की या किसी को हेल्प करने की, और एक वो इंटरेस्ट होता है.
मैं हाँ. आपको एक उदाहरण दूंगा। अभी हमारी यूनिवर्सिटी में, एमिटी यूनिवर्सिटी में, हम लोगों ने एक कोर्स शुरू किया। हमारी ऑनरेबल वाइस चांसलर का एक विजन था, फाउंडर प्रेसिडेंट का, कि भाई एमिटियंस आर शुड बी डूइंग वेरियस थिंग्स फॉर द सोसाइटी, एंड वी आर डूइंग इट। सो इन दैट वे इन 2014 वन कोर्स वाज प्लान्ड, एंड दैट name of the course is human values and community outreach. So it's about human values inculcation in all the students, and then the community outreach mein they are social responsibility and community outreach. They are working in communities on social issues, and they're contributing whatever they wish, actually. So in that, what happens, the problem which you are saying, that on the basis of NGOs, this volunteers, definitely this you can't run a project. So similar thing is here, that even I have seen that NGOs, we are not able to trace where we can send our students to work and learn something. So I think both the aspects we have to see. There are organizations where they do not have understanding, they do not have projects, they do not have that vision, and they are just doing many things. So I think that is also one aspect which we should see. And definitely volunteerism is something which is for all time. Actually, it is not about that I'm doing a graduation or masters and I'm associated with any organization. So it is for lifetime, actually, because I have seen people, if they are by heart doing something, then definitely they long life after getting jobs, and even wherever they are. And I think you were also telling me that, well, many people are donating, and maybe in whatever way they can, they contribute. So this aspect is there. But maybe I will like to invite Sunil ji here also, because our students worked with him also, and many of them, after that also, I know he paid, and then he managed some many things. So Sunil ji, what is your view on this? By the way, we also pay our interns whom we then hire. Acha, acha, yeah, हाँ हाँ जी, correct, that we do. But in the beginning, initial में तो वो voluntary होता है बस. correct, correct, जी correct. जी No, no, it. मिलता है. I think what uh, how we see the whole thing is that if you are doing a small with a resource intense program where you need more human resource, so certainly volunteers is on your side, is always be helpful. When it becomes very skilled and professional, like a doctor or somebody who has a very specialized understanding of something, some issue or some, then you certainly need paid people, and they should not be denied because they are working in a voluntary sector. And what is happening in India, the government at times, many times, see the government, especially in the service provider. If I'm as a NGO working in a service as a service provider, then I may be seen by the local government or state government as a sort of a subcontracting. So that should not be the case. It means the minimum wages of a somebody which should be given to any other person in any other way. They should be respected and they should be given. So is the not only minimum wages but the growth of, because career is there. Somebody who is already interested in investing his time and energy, he should be paid back uh, as good as it can be in a corporate sector or any other place or with the government. So the government is supposed to be the best employer, especially when they are granting a grants or funds to the volunteer organization. So what happened that most of the time when you are depending on the schemes of the government, then you are because these schemes has not been revised for many decades also. So naturally, what you are getting is a very what has been committed 10 years back, and now the market has changed. Your rupee value has been like it has been changed. It has been devalued. So naturally, it is something that you need to continue
in line with what is happening in the market. Mm. But we can't substitute the volunteers with the paid one, because then it becomes as good as any other private sector. Mm. Because what makes it different from if a corporate sector is is a something that they are taking care, taking back all the profit, and it is for profit making. And what is left with this is the voluntary sector is if it becomes only for the profit, it means you are reinvesting in the whole thing in your own program. So naturally, it becomes self-sustaining, and in a long run, certainly you need for project management, project running, you need paid staff. So I'm not denying or against it, but what is important is that if your whole nature of your organization become a project management based or paid, it is totally sustaining only because of the money you have, Mm. then voluntary sector is in danger in a sense, because you need because volunteers are the blood. Something. So you need both the things together to continue your work, even if it is sustaining, because you have your own other work. So this is how like I see. No, I just want to say that when we, for our projects, we invite people to project coordinator and pay them. It's very strict. We interview them. Only a person with a bent of mind of service will be Yeah, employed. yeah. It is So, the so that is the whole point. So, in a way, that person is a volunteer, but because they're starting out in life, they need money to live. yes, yes. कहाँ से अपना Yeah. रेंट देगा? So that is, so it is very important when you employ, तो उन उन लोगों को लेते हैं ना जिससे आपकी टीम बनेगी, उस जो सर्विस ओरिएंटेड ये वो नहीं, जो इथोस आपका जो एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई है, उसको ही हाँ शुड बी ट्रीटेड लाइक हाँ एन हाँ एम्प्लॉई. नहीं नहीं लाइक एन एम्प्लॉय नॉट या लाइक एन एम्प्लॉय एज ए सोशल वर्कर विद द कॉमन विजन या तभी तो आगे जाएंगे इट्स अ टीम शांति सहयोग सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कई बार ऐसा हुआ एक दो लोग सिर्फ जी, पैसे के लिए आए उनको हटा दिया हम लोगों ने क्योंकि जब तक वो दर्द नहीं है एम्पैथी नहीं है तो फिर फायदा क्या ठीक तो बात और है। जो आपने एक बात कही कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो आपने एक इशू हाँ था, जी जी तो इसमें एक मैं ये कहूँगा कि जो हम लोगों ने भी देखा कि जो रिकवरिंग एडिक्ट हैं, जो लोग उस दर्द से गुजर के जाते हैं, सर्वाइवर्स है, हम्म involving and getting involved these people who have gone through the whole process, हम्म जो खुद एक सर्वाइवर रहे हैं, और अगर वो खुद उसमें जाकर के आपके यहाँ पर काउंसलर का काम करते हैं, पीयर काउंसलर का काम करते हैं, तो वो जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कनेक्ट करने का जो उनका है जरिया, वो क्योंकि दर्द को दर्द के साथ कनेक्ट कर पाता है वहाँ पर, और वो एक जिसको कहते हैं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं क्योंकि वो उस दर्द से गुजर चुके हैं. So I think involving peer education and peer counseling is peer. When I'm saying peer means those who have gone through the whole process, वो खुद जा चुके हैं और अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि now they have a courage हम्म to come out and speak for themselves. अब वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बोल रहे हैं. बिकॉज इट्स ए प्रोसेस. अक्सर क्या होता है कि जो लोग ठीक हो चुके होते हैं, हील कर चुके होते हैं, वो वापस उसी दर्द वाली जगह में दोबारा जाना नहीं चाहते. तो अगर वो नहीं जाना चाह रहे तो उनको तो हम नहीं, बट उनको अगर और काउंसलिंग करी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको और सहयोग दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो शांति अपने अंदर भी बना पाएंगे और दूसरों की जिंदगी में भी शांति और सहयोग बना पाएंगे. हाँ नहीं यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि जरूर जैसे जब हमारा भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी होगा तो सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ की वो औरतें इतनी कुछ मतलब लेट्स से ओनली 20% have been empowered to come and tell their stories and tell others to come out, but it's only 20%, not 80%. तो मतलब बड़ा स्लो है ये मामला. बिल्कुल आपने जायज कहा, लेकिन उनको सुन के कई लोग दे फील empowered to come out and talk and whatever, but it's a very small number. मैं एक और यहाँ उदाहरण देती हूँ फ्रॉम ग्रास रूट्स वर्क. हमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ग्रांट दिया था टू ट्रेन 125 अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन एज नर्सिंग असिस्टेंट्स. जैसे घर में नहीं रखते 12-12 घंटे की, तो हमने उनको बड़ा अच्छा ट्रेन किया. सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल से थियोरी
के लिए डॉक्टर्स आए, करवाया। फिर ये जो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट है ईस्ट ऑफ कैलाश, वहाँ पे उनका हमने प्रैक्टिकल करवाया साल भर, एंड इट वाज रियली गुड बिकॉज बल्कि मैं तो बड़ी हैरान थी। मुझे बुलाया था नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ने जब उनको सर्टिफिकेट देने थे, तो जब मैं वहाँ पहुंची तो कोई मुझे ना, देयर वाज अ बंच ऑफ गर्ल्स देयर, वाइट कोट पहने हुए, बाल बांधे हुए, लुकिंग सो गुड। मैम मैम मैम, मैं सोचू पता नहीं मेरी लड़कियां तो कोई है नहीं है, तो कोई और ही है। फिर कहते मैम आपने पहचाना नहीं, तो मैं तो बिल्कुल ही दंग रह गई कि वो तो लड़कियां को हुआ क्या, इतनी वाइट कोट पहन के वगैरह सब कुछ। खैर दैट इज सक्सेस, बट आफ्टर दैट यू नो, जब उनको एम्प्लॉयमेंट देनी थी तो सब कहें मैम नज़दीक के हॉस्पिटल में लगा दो, सिर्फ हॉस्पिटल में लगा दो, हमने प्राइवेट में जाना ही नहीं। बतेरा उनको कहा कि ये प्राइवेट वालों को हम जानते हैं, आपसे कुछ काम नहीं कराएंगे, केवल चाय बना देना पेशेंट के लिए, कोई आए, कोई सिर्फ पेशेंट को देखना है, कोई डस्टिंग नहीं कराएगा, पोछा नहीं लगाएगा। तब भी नहीं गई, they just did not go. So hardly again 20%, and then दूर का अस्पताल नहीं चाहिए, रोहनी नहीं जाएंगे, नजदीक है, कालका जी में है, अरे इसको यहाँ लगा दो, बत्रा में लगा दो, मतलब तो अब इसको कैसे करा जाए? Then we dropped that program after that. I don't know how to tackle it, what to do. Maybe Prashant ji is a social worker, he can tell us. आपने भी भाई जो ये सुनील जी अभी आप आपने भी जो अभी कहा था कि इट शुड नॉट बी पेड, फ्री नहीं होना चाहिए। ये एक समस्या है कि जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भी अगर उसमें एक टोकन मनी या एक उसका एक ये प्रोफेशनल तो फ्री फीस था, रखते हैं, ये नर्सिंग है ना। असिस्टेंट वाला फ्री था। और तो उसके अंदर क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक सेल्फ कंफर्ट आता है वो आ जाता है। अब यही अगर उन्होंने शायद प्राइवेट से किया होता हाँ और वो तो तो शायद इतने वो, पैसे। तो उसके अंदर देयर इज ए इन्वेस्टमेंट, सेल्फ इन्वेस्टमेंट वहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो उसको जब हम लेके चलते हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि रास्ता और बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा वॉलंटरी सेक्टर है, जो एक फिलेंथ्रोपिक अप्रोच फ्री का जो एक सवाल जुड़ जाता है, उससे भी हम लोगों की जो वापस जो मैसेज जा रहा है कम्युनिटी को, और मैसेज और जो कम्युनिटी का रिलेशन है हमारा, उसमें भी वो बहुत फर्क आ जाता है। तो सही बात है। कई बार हम जाते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि अभी हम सीनियर सिटीजन्स के साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। तो हम लोगों ने काफ़ी जाके किया, अलग अलग सीनियर सिटीजन्स को, एजिंग हेल्दी एजिंग का ही पार्ट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये बैरियर महसूस करते हैं कि टेक्नोलॉजी इज बैरियर। तो जो दादा पोते का जो संबंध है उसको भी हम उसमें जोड़ पाते हैं, क्योंकि पोता जो है वो जो चला रहा है या पोती है वो जो चला रही हैं वहाँ पर, ग्रैंडसन जो है या डॉटर, वो दादा को ज़्यादा सिखा पाता है, समझ पाता है, और वो टेक्नोलॉजी से ओवरकम कर पाते हैं। इसलिए नहीं कि वो कोई जॉब करेंगे, इसलिए कि वो उसके उस टेक्नोलॉजी की जो दौड़ है, कहीं अपने को लेफ्ट आउट महसूस ना करें, और फिर वो ओल्ड एज होम की तरफ जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो वहाँ देयर वाज लॉट ऑफ एंगेजमेंट है बहुत ज़रूरी। तो वहाँ पर जब हमने उनको कहा कि आप इसके बाद अब आप वॉलंटरी सर्विस करिए कुछ साथ में, पे बैक, तो उन्होंने जब वो पे बैक किया तो उसमें उनको जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला, या उनके जो रिसोर्सेज है, एक थे ड्राइवर होते थे, वो उन्होंने जाकर के, मंडावली एक जगह है, तो उसमें उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन में बंद पड़ा हुआ पिछले 5 साल से, उन्होंने उसको खुलवाया, उन सब ने इकट्ठे होकर मिल के काम किया, और ये वो सब ओल्ड एज लोगों के लिए थी सर्विस, जो कि वो कभी भी उन्होंने यूज नहीं करी। जी जी। क्या है कि जो आप जब तक आप उसके कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ते हैं तो दे हैव ए रीजन टू पे बैक आल्सो। तो वो Correct. हमें नहीं पे बैक किया उन्होंने उसी कम्युनिटी को ही पे बैक किया, और अब बहुत अच्छा वहाँ पर एक काम कर रहे हैं, ईस्ट दिल्ली में खास तौर से, दे आर। तो ये उसमें हमारा रोल कम होता चला गया, क्योंकि हम वहाँ पर अब केवल टेक्निकल नो हाउ ही प्रोवाइड कर रहे हैं। शायद उनको ज़्यादा हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं है या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट मेन है कि वो दे बीन नाउ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। करेक्ट। तो इसमें जी जी हाँ बताइए। सिर्फ एक चीज और, थोड़ा सा ये भी है कि सरकार बदलती है। फॉर एग्जाम्पल शीला दीक्षित का ये प्रोजेक्ट था जेंडर रिसोर्स सेंटर, 7 वो बंद साल हो गया, बड़ी सक्सेसफुली चलाया, और जिसमें कि द फुटफॉल ऑफ 5,000 women per month, कैन यू इमेजिन?
इट वॉज सो सक्सेसफुल, बहुत काम किया तरह तरह का, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल हियर। फिर केजरीवाल जी आए तो उन्होंने बंद कर दी फंडिंग। अब बंद कर दी तो बतेरा उनको कहा कि जी ये तो स्लम की औरतों के लिए है, 17 स्लम में फ़ायदा हो रहा है। नहीं नहीं, मैं शुरू करूँगा इसको कोई और नाम से शुरू करूँगा, यू नो समथिंग सम एल्स, कि मेरी फाइल पड़ी हुई है एलजी के पास, वो आज तक वहीं पड़ी हुई है, तो फंडिंग ही नहीं मिली। तो अब वो, अब जब फिर हमने इसको जब रिवाइव किया, सो देन वी स्टार्टेड चार्जिंग 50 रुपीज़ अ मंथ। कोई देने को ही नहीं तैयार, क्योंकि हमारे पास तो फंडिंग थी नहीं, बड़ी मुश्किल से, मतलब वो सेंटर अब तो खैर चल गया वगैरह, चल गया। इट्स अ सक्सेस स्टोरी। बट आई मीन सरकार चेंज हुई, फंडिंग बंद हुई, फिर वो दिक्कत। और जी बिना पैसे के इट कैन नॉट गो। करेक्ट। Social this sector, it is wrong to think that social service should not be paid for young people, not for founder or people like me and you. हमारा तो क्या सब कुछ है, क्या करना नहीं है। नहीं, अब इसमें सुमन जी, मैं जो आपने बात कही एक्चुअली, जो अभी जो डिस्कशन हो रहा था कि भाई सही लोग नहीं मिलते हैं, या प्लेसमेंट्स की आपने बात की कि जब आपने ट्रेनिंग दी, तो आई जस्ट वांट टू ऐड हियर कि कहीं ना कहीं जब एनजीओ, मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, अगर एनजीओ की जब हम बात करें, तो जब कोई एनजीओ एक प्रोजेक्ट बनाता है और एक फंडिंग एजेंसी को जब वो देता है, तो उसका जो होमवर्क या जो प्रिपरेशन है, क्योंकि हर एनजीओ का एक अपना एक एस्पेक्ट है कि भाई वो मतलब उसको फंड चाहिए, तो नॉर्मली वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स की बात आ जाती है, तो वो इनोवेशन कि हाँ भाई क्या सिखाएं क्या करें। तो ये जो आपने अभी स्किलिंग की बात की, मुझे ध्यान आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक स्पेशल प्रोजेक्ट हुआ करता था जिसमें बीपीएल्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, बिलो पॉवर्टी लाइन को, उसमें स्किलिंग का, और इट वाज अ वेरी मेजर प्रोजेक्ट। किसी भी एनजीओ का अगर 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो उसको वो मिलता ही नहीं था, एंड इट वाज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट, और रूरल एरियाज में वो चलता था। तो उसमें सिचुएशन ये थी कि भाई कुछ एनजीओज कंप्यूटर सिखा रहे हैं, कोई हॉस्पिटैलिटी का सिखा रहा है, कोई किसी और काम को सिखा रहा है। तो उसमें होती स्थिति ये थी कि जो मैंने देखा एक्चुअली कि वहां पर एक ही बच्चा, अब 2 एनजीओ अगर हैं आसपास कहीं चल रहे हैं एक शहर में, तो वो दोनों जगह एनरोल हो गया है, क्योंकि उसमें एक एक ऑनरेरियम भी था एक्चुअली। उस पे स्कीम की खासियत थी कि ट्रेनिंग के साथ में उनको एक स्टाइपेंड भी मिलता था, और उसके बाद में उनको एक प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी थी। तो अब एनजीओ के संग प्रॉब्लम ये होती है कि जब मोबिलाइजेशन करना है तो हम सोर्सिंग कहाँ से करें, क्योंकि बात है नीड असेसमेंट की, कि हम ऐसे व्यक्ति को सिखाएं जिसको जरूरत है। तो अब हमारा टारगेट है कि हमको 1,000 लोगों को ट्रेनिंग देनी है, तो हमें जो मिल रहा है हम उसको अपने हिसाब से कर रहे हैं। इन दैट वे आई एम नॉट सेइंग कि कोई फाउंडर या जिसने प्रोजेक्ट बनाया उसकी गलती है। ऑब्वियसली एज ए टीम जब कोई काम करता है, उसके पास एक टारगेट होता है कि भाई हमें 100 लोगों को रीच आउट करना है, इनको हमें मोबिलाइज करना है, लेके आना है। तो वहां पर जो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो जो फंडिंग का, मैं चाहे सीएसआर हो या कोई भी आप एस्पेक्ट देखें, तो उसका जो इम्पैक्ट की बात अब करें, क्योंकि अब लोग इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उसको मेजर हम कैसे कर रहे हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक 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 थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क डेवलप करती हैं एक जनरल वे में, पब्लिक में या एक किसी में, कि भाई हाँ भाई ये हुआ तो, लेकिन ये विजिबिलिटी नहीं है, उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा। बेरोजगार या स्किलिंग हो रही है, कितने लोग सीख के कितनों को नौकरी मिल गई, क्या हुआ। लेकिन हाँ, कुछ केस स्टडीज हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल है। अगर 100 को ट्रेनिंग दी गई, उसमें से 10 15 20 लोग तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये पॉइंट है, बस मैं एक और चीज इसमें ऐड कर रहा हूँ, जहां तक बात अभी हमने दूसरी की, फ्री बीज की और इन सब की, कि कहीं ना कहीं इसमें मैं भी इसके अगेंस्ट हूं, क्योंकि हमने देखा है कि जब स्पेशली अभी आप कोविड में देखें, तब फ्री वेबिनार्स का और जो वर्कशॉप्स का जब एक बाढ़ सी आ गई, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि भाई घर पे बैठ के हम ये सीख लें वो सीख लें, और मैंने देखा लोगों ने बहुत कोर्सेज किए। फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे करके उसकी जो एक जो सैंक्टिटी थी, एक जो, फिर लोगों ने क्या किया कि भाई फीडबैक फॉर्म भरो, अब ये करो तो हम कहीं ना कहीं आपको तब सर्टिफिकेट देंगे, या कोई उन्होंने असाइनमेंट दिया, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है, अगर हम देखें, अगर गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से कहें, तो डेफिनेटली हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखें, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। गवर्नमेंट इज, a state has to provide basic minimum amenities
human rights, fundamental rights, there are many things actually which needs to be taken care. तो उसमें कहीं ना कहीं, अब कोविड वैक्सीन की मैं बात छोटी सी लेके खत्म कर रहा हूँ। कोविड वैक्सीन का मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक नोएडा में कैंप लगाया एज ए सोशल वर्क। मुझे लगता था कि फैकल्टी कि भाई कुछ कोविड में इतना नहीं कर पाए, लॉकडाउन में फंसे रह गए, तो क्या करें। तो ये हुआ भी, चलो वैक्सीनेशन की एक अपॉर्चुनिटी आई तो उसको लगाया। फ्री में वैक्सीनेशन को लेके भी कहीं ना कहीं पैसे और फ्री में लोगों में बहुत भ्रांतियां रही। क्लास में लेके जो अफोर्ड कर सकते थे उन्हें लगता था अरे फ्री में लग रही है, पता नहीं क्या लगेगा, कैसे लगेगा। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, डेफिनेटली उनका एक अपना एक अलग पर्सपेक्टिव था, और दूसरी भी कई मिथ्स इससे जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर बात यह है कि जब हम फ्री कोई चीज दे रहे हैं तो लोग उसको कैसे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझें और हम उसको सेलेक्ट करके कैसे दें। आज ही मैं एक आर्टिकल एनजीओ डे पे पढ़ रहा था कि आज एनजीओ डे है। एक एनजीओ वाले एक कंबल बांटते हैं और 10 लोग मिलके फोटो खिंचवाते हैं। मतलब दिस वाज ए काइंड ऑफ पोस्टर। तो अब उसका सेंस अगर आप दूसरे में देखें कि एक कंबल के लिए 10 लोग खड़े होके फोटो खिंचवाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो सेंस भी उसमें एक डिफरेंट वे में है। तो आई थिंक हमें इस एनजीओ सेक्टर, आज इस डे पे डेफिनेटली नॉन प्रॉफिट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, और ना बिना इसके कोई काम चल सकता है। बात यह है कि आज हम अपनी यंग जनरेशन को, या जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो क्योंकि हम सोशल वर्क के हैं तो ऑब्वियसली सोशल वर्क स्टूडेंट्स या फिर जो भी लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा आज आईआईएम आईआईटीज के लोग ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट है, आप देखिए नज फाउंडेशन तमाम ऐसी हैं जो 25 लाख 40 लाख रुपए के पैकेज दे रहे हैं, नॉन प्रॉफिट सेक्टर में एक सैलरीज दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, और उनकी जो विजन है, उनका जो काम करने का स्टाइल है, उसमें भी बहुत बदलाव आया है। और जब से सीएसआर में हुआ है तब से और उसकी चीजें बदली हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो पॉइंट सुमन जी ने उठाए और जो सुनील जी ने कहे, और इस पे अब हम प्रसून जी से भी इसमें कुछ उनका पक्ष रखने जानने की कोशिश करेंगे। आई थिंक सुमन जी आप कुछ कह रही थी, आप कहिए, फिर हम हाँ, जी के पास पहुंचेंगे। जी एक और तो, क्योंकि ग्रास रूट का तजर्बा, जी एक चीज आप सबने सुना होगा, देयर वाज स्कीम वाज फ्लोटेड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना योजना, जी 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 डेवलपमेंट वाली। तो हमने उसके लिए ऑप्ट कर दिया। जब उसमें हम लोगों ने बच्चों से 600 रुपया लिया, है ना। और फिर ये बात थी कि जब वो सारा काम कर लेंगे, और देन द मनी विल बी गिवन बैक 1200। 600 सरकार देगी, 600 इनिशियल मिलेगा। 600 शुरू में इसलिए लिया सरकार ने ताकि वो सीरियसली करें। अच्छा जी, सारा कोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, वगैरह वगैरह। जब अब आई बात एग्जाम देने की, प्लीज आपको मैं क्या बताऊं कि जब बच्चे आए पहला दिन एग्जाम देने, सर्वर डाउन, PMKVY का। सेकेंड डे सर्वर डाउन, थर्ड डे सर्वर डाउन, फोर्थ डे सर्वर डाउन, एक हफ्ता सर्वर डाउन, 15 दिन के बाद तो बच्चों ने कहा मैम हमें वो 600 रुपये चाहिए ही नहीं, हमारे तो आने जाने में इतने लग गए, हमें नहीं चाहिए, ना हमने एग्जाम करना है और ना हमें। इट वॉज अ टोटल फ्लॉप। The server was down 15 days, 20 days, 1 month. This is hard reality. बस हमने तो जी वो छोड़ ही दी इसकी। This was प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो you know what to do. So and one more last thing, grassroots का experience, Ministry of Minority Affairs आपको 5.5 लाख दिए, 2.5 लाख इंस्टॉलमेंट आ गई फर्स्ट, फिर आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट तब मिलेगी जब आपने सारे पैसे अपनी जेब से खर्च करके और सब स्क्वायर कर दिया। देन यू विल अप्लाई, दे विल ऑडिट एंड दे विल गिव यू, एंड दे विल गिव यू आफ्टर 2.5 years दे गिव अस। 2.5 साल के बाद हमें 2.5 लाख या 2,60,000 मिला विदाउट एनी इंटरेस्ट। यू नो, आई मीन लुक एट दिस। अब हनी जी दे आर अंडरस्टाफ, बिजी हैं। अरे बिजी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स 2.5 लाख, चलो 2.5 महीने लगा लो, 2.5 साल भाई साहब, व्हाट इज दिस? So I think somewhere the government is also not responsible. गवर्नेंस में डेफिनेटली। लेकिन मैं सुमन जी ये कहूंगा कि अब कुछ चीजें सुधरी हैं। जैसे एक मैं नीति आयोग का एग्जांपल लूं, जब से ये इन्होंने दर्पण पोर्टल वगैरह आया, और मिनिस्ट्रीज में भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस, और तो आई थिंक चीजें स्ट्रीमलाइन बहुत हुई हैं। अब इसमें मैं प्रसून जी को जस्ट एक उनका व्यू जानना चाहूंगा, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि
वॉलंटियर्स को लेके आपका क्या मानना है, और क्या आपको कभी लगा कि कोई जो आपने मतलब फ्री में कुछ कराया तो उसका क्या लोग सीरियसली नहीं लेते हैं या कोई इम्पैक्ट नहीं होता है? इज एनीथिंग यू वांट टू से ऑन दिस? नहीं, आई थिंक डॉक्टर सुमन और डॉक्टर सुनील दोनों ने बहुत अच्छे इसमें तर्क दिए हैं। एंड बहुत सारे यहाँ पे आपका स्टूडेंट भी है। मैं जो देख रहा हूँ लिंक्डइन में एक दो हमारे साथ काम भी किया है। जी जी सो जी जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको अभी व्हाट्सएप में मैसेज ही भेजा, आप रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, यू सेंड योर फ्यू जी पीपल, वी हैव 3-4 प्रोजेक्ट्स जी। एंड आई एम फॉर गिविंग देम some remuneration definitely. Time is money, time is everything, and they should be Correct. motivated to work with at least to start with as an intern, and then if they are really eligible to be a staff member they can be. And आई थिंक एनजीओ स्कोप इज इम्प्रूविंग एंड अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट से बाकी इंस्टीट्यूट से भी बाद में बहुत अच्छे करते भी हैं। रिगार्डिंग फ्री थिंग्स ऑफ कोर्स मैडम, प्रॉब्लम यही है कि across the political line everybody has started giving this because their vision is very short term. Like इस बार इलेक्शन जीतना है तो मुझे, वोट इन्होंने बैंक। ए दे रहा है तो मुझे A+B+C+D देना है, दैट इज द थिंग। एंड इन केस ऑफ एनजीओ दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल। आप पैसा लेके क्या करोगे, इतना पैसा क्या होगा, ये होगा, यू नो दैट ऑल दिस स्टोरीज आई नीड नॉट टू डिस्कस हियर। बट कुछ कुछ चीजें फ्री में करना ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो चैरिटेबल ओल्ड एज होम चला रहे हैं वहां पे आगे अगर किसी आई विल से किसी पेरेंट किसी चिल्ड्रन ने अपने माँ बाप को रात के अंधेरे में आके हॉस्पिटल ले चलो बोल के वहां पे छोड़ के, वोटर आईडी आधार कार्ड सब कुछ लेके छोड़ के चले गए हैं, एंड देन व्हाट इज द सिचुएशन? सो कुछ एक जगह पे हमें, ऑफ कोर्स दिस शुड बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट, बट इफ गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द ओनर्स and you are a kind-hearted person, you have taken the onus, then you have to fulfill the responsibility. Yeah, that So is there, true. of course, you have to take care of them free of Mm, cost only. mm, And as you only rightly mentioned that खाना खिलाओ तो बच्चे आते हैं, खाना नहीं खिलाओ महिलाओं को, जो बात कर रहे थे, mm, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ मिड डे मील कंसेप्ट बेसिकली। बट अभी तो आप खाना खिलाने से भी नहीं आएगा क्योंकि खाना भी आपका आजकल घर में पहुंच जाता है। सो yes, but if there is value addition through your program to someone, शुरू में कम लोग आएंगे बट धीरे धीरे you will take up that just you gave your example very clearly. So that's it from my side. I can see many students are giving, if they have any question, instead of only wishing good evening, very good, they can raise some genuine question what they have. But Yeah. future is very bright. Wherever you go, for the student I will say, wherever you go, uh, you learn the documentation. Whatever you do is all about documentation. So even if sometimes happen, even for my NGO, अभी मैं धीरे धीरे मैच्योर हुआ, 10 साल से चला रहा हूँ, बट वी ट्राई टू वर्क। इसमें मुझे लगता है सोनी को मैं देख रहा था, हमारे साथ काम किया, मुझे अगर एक प्रोजेक्ट का फंड मिलता है उससे मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, बट दैट इज नॉट राइट एक्चुअली। क्योंकि Correct. अगर लंबा चलना है तो यू हैव डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग। अभी जो आप कंबल वाली स्टोरी सुनाया आपने, वो असल में एक कंबल दे के 10 फोटो इसलिए खींचते ताकि बाद में उसको 10 कंबल का पैसा मिले। उसके बाद ऑन ए प्रॉपर साइड, Correct. चीटिंग करने वाले से हम उस विषय में हम डिस्कस नहीं करेंगे। वी शुड नॉट Mhm. डिस्कस नेगेटिव। आई होप ऑल एनजीओज आर वर्किंग ट्रांसपेरेंटली, yes, but documentation matters most. So yeah, that is true. students को मैं ये बोलूंगा कि you go and learn how to write project, how to document along with your passionate work. So Mm, there is a gap between policy and implementation in the ground. सो ऐसा नहीं है कि ऊपर जो पॉलिसी मेकर है, गवर्नमेंट है, दे डोंट वांट टू सर्व, दे आल्सो वांट टू सर्व, बट that difference we have to connect, and that is the job of most of the NGO. But I think you are doing great job. बहुत बढ़िया। Very nice. I think up now we are actually. Is there any question, students especially, and those who are viewers watching us on different platforms? So if you have any question, this is the time you can just write down in the chat comment section, and we will take it up. So Sunil ji, at the end, I just want to ask from three all of you that आजकल डेफिनेटली एनजीओस का एक बहुत एडवांस वर्जन आ गया है, क्योंकि जब से आप देखिए तो
टेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप बढ़ा है, अब सोशल मीडिया का एक फंड रेजिंग में भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बहुत बूम है आज के समय में। गिव इंडिया से लेके और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। फेसबुक ने भी लॉन्च कर दिया है अपना नॉन प्रॉफिट्स के लिए। ट्विटर भी बहुत प्रमोट कर रहा है नॉन प्रॉफिट्स को कहीं ना कहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि जैसे आप लोगों तो इतने पुराने हैं भाई, सबसे अगर मैं कहूँ तो प्रसून जी यहाँ पर हैं शायद जो 10 साल वाले हैं, नहीं आप दोनों लोग तो भाई बहुत लंबे 20-25 साल से ज्यादा का समय आप लोगों ने नॉन प्रॉफिट में दिया है। लास्ट क्वेश्चन, आज एनजीओ डे है और अगले साल जब हम लोग शायद मिलें तो डेफिनेटली बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे इस सेक्टर में। क्या आपको लगता है कि जो चैलेंजेस हैं एक एनजीओ को रन करने में या फिर उसको मैनेज करने में, हम एक एनजीओ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या फंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है या ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है या फिर कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन एक सबसे बड़ी समस्या है? इन तीन में से कोई भी, या कोई आप ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इन तीन एस्पेक्ट्स में चैलेंजेस क्या हैं एनजीओस के, जो कोलैबोरेशन की बात हम कर रहे हैं, जो और चीजों की कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? तो मुझे लगता है मैं सुनील जी से शुरू करूंगा इस क्वेश्चन को। जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे आपने कहा कि मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ या प्रसून जी 10 साल से काम कर रहे हैं, ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज जो हमारी जो आज है, आज की जो कम्युनिटी है वो आज की है, यानी कि हमारे अंदर वो न्यूनेस होना जरूरी है कि हम उन नीड्स को, उन ज़रूरतों को और उन प्रॉब्लम्स को और उन इश्यूज को हम सही ढंग से समझ सकें। ये ना सोच करके कि मैं 20 साल से हूँ तो मैं जानता हूँ। आज भी मुझे ये लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आज भी लगता है कि मैं क्योंकि उनकी नीड्स और जो उनके इश्यूज हैं, जिन कम्युनिटीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं, चाहे यूथ ही को ना हो, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ जो है वो बदल रही हैं। जो मार्केट है वो बदल रही है। तो आपको उस मार्केट में अपने को, मार्केट का मतलब हम मार्केट के हिस्से हैं, और मार्केट के हिस्से का मतलब है कि मार्केट हमारे पे असर कर रही है और रोजाना बदल रही है। तो जो जो जितने भी बदलाव हो रहे हैं उसके लिए हमें रोजाना तैयार होना पड़ेगा। हम एक बार तैयार होकर के सस्टेन नहीं कर सकते, यानी कि हमें रोजाना अपने अंदर बदलाव लाते रहना पड़ेगा, चाहे मैं कितने ही सालों से काम कर रहा हूँ। इट डजंट मेक, क्योंकि मैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि 10,000 एडिक्ट्स के साथ मैंने काम किया है, नहीं, 10,000 बार मैंने अपने साथ काम किया। तो जब तक मैं अपने साथ में काम नहीं करता हूँ, मेरा एक सेल्फ इवॉल्विंग एक प्रोसेस ना हो, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं हमारा जो काम है, क्योंकि जो हमें अलग करता है और प्रोफेशन से या और सेक्टर से, वो हमें बनाए रखना चाहिए कि मेरी शांति, मेरी वेलनेस, मेरी वेलबींग जो है वो मेरी कहीं ना कहीं उसी सोशल वर्क या उससे जुड़ी हुई है। तो मैं उसमें न्यूनेस लाते रहूं और नए नए चैलेंजेस को रोज़ाना फेस करता रहूं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हों, चाहे कम्युनिटी की तरफ से आ रहे हों, चाहे फंड रेजिंग की तरफ से आ रहे हों। तो मैं अपने स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ को इतना ही लिमिट रखूं जहाँ तक मैं उसको चला सकता हूं और आगे चल सकता हूं, क्योंकि उसमें अगर मैं खुद एक प्रॉब्लम बन जाता हूं और तो मैं इतनी सारे लोगों को और भी ज़्यादा समस्याओं में ग्रसित करूंगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी न्यूनेस को बनाए रखना है, उस फ्रेशनेस को बनाए रखना है, चाहे हम कितने ही सालों से इस फील्ड में काम हो। थैंक यू। या आई थिंक अब मैं सुमन जी से जानना चाहूंगा कि आपका क्या पॉइंट व्यू है इस पॉइंट पे। नहीं, सिंस आई एम अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, तो जो सुनील जी ने कहा ना, ये तो सुकरात ने कहा है कि दैट पर्सन इज वाइज हु सेज आई ओनली नो दैट आई नो नथिंग। सो आपने बेटर राइटली सेड, सुकरात सेड दिस लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो एंड इट्स वेरी ट्रू। सो मेरा मेरा ये विचार है कि जो आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त था प्रशांत जी, बट आई थिंक द विजन ऑफ द फाउंडर is very important, and to communicate that vision to your team. So वो टीम को ये विजन कम्युनिकेट करना और किस तरह आप करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक वो विजन टीम में नहीं आता कुछ हद तक, तब तक इट जस्ट डिफीट्स द पर्पस, फिर मज़ा नहीं है, क्योंकि सेवा भाव नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या। ये तो एक दिल का मामला है ना,
ये पैसे का मामला नहीं है। तो जब तक दिल इन्वॉल्व नहीं होगा तो नहीं होगा। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी दैट ये कब होगा, व्हेन यू विल हैव विलिंगनेस टू लिसन. You have to listen, like we have staff meetings and all, we are willing to listen to what they say. So once you are willing to listen and have that, democratic setup and आदान प्रदान होता है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है. Then the team is empowered to tell you, and you also can listen, and then you can come together and grow. Because evolution बहुत जरूरी है इस केस में. So अच्छा I think सुमन जी, आप ये बताइए, मैं आपको जस्ट बीच में एक वो कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है जो आजकल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि आपको कोई अवार्ड नहीं मिला या किसी ने अवार्ड दिया तो उससे कोई मोटिवेशन आया, या ये जो अवार्ड्स की आजकल दौड़ चल रही हाँ, है बहुत तो उसमें आप क्या और ऐड करना चाहेंगी? जी, मुझे भी 11-12 अवार्ड मिले हैं. आई ऑलवेज रिसीव देम ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम, बिकॉज टीम है तो हम लोग हैं. इट इज जस्ट बाय चांस आई एम द लीडर, सो आई गो एंड गेट इट. बट व्हेन आई रिसीव इट आल्सो आई से दैट, एंड नॉर्मली इट्स आउट ऑफ द ब्लू. वी हैव नेवर वी कई बार आता है कि अप्लाई फॉर दिस अवार्ड, इतने पैसे भेजो, हम कभी नहीं करते. हाँ, जितने भी अवार्ड्स मिले, 12 मिल चुके हैं वैसे तो. दे हैव कम, पीपल हैव गिवन, but I've always accepted on behalf of my team. And how far it empowers, I mean, the team is very happy to get those awards. But आपकी बात सही है, आजकल तो हर बंदा Z awards, this award, that award, so it's sort of happens like that. And so I think that is they थैंक don't matter. They don't matter ultimately. Your award is कि when really कोई domestic violence victim is empowered to speak, in front of women and empower, that is your award. बच्चे हमारे 12वीं कर गए, अब दे आर काम कर रहे हैं आगे, हमारा पूरा रिकॉर्ड बना हुआ है, इतने बच्चे कर गए 12th and now they are working and this thing. And in fact मैंने सारे बच्चों को कहा जो जिनकी नौकरियां लग गई, that please give back to शांति सहयोग. They have all given me, slum के बच्चे अब नौकरियां कर रहे हैं, 5,000 रुपया. In fact now my next step is to create an alumni. That is award. मुझे ये लगता है कि वो चीज़ आती है ना, तो उसमें मज़ा आता है. तो आई थिंक टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, टीम एम्पावर्ड होनी बहुत ज़रूरी है. जी. अब हाँ प्रसून जी, नाउ CEO, like in terms of challenges, what do you say, feel that where you are something is lacking in terms of the new technology thing, or maybe the volunteer thing, funding? What are the challenges you face normally when you run an organization? नो एक्चुअली चैलेंज तो है, रहेंगे. चैलेंज के बगैर तो मज़ा भी नहीं है. बट प्रॉब्लम, मुझे मेरा जो पर्सनल प्रॉब्लम है, दैट आई विल से दैट we should have a balance between our professionalism, passion, need of the situation. ये सब के बीच में बैलेंस जब तक नहीं होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है. लाइक जैसे मेरा माय ड्रीम इज टू टीच 1 million children, engaging 1 lakh elderly people. So if I say that I want to do it tomorrow, is it possible? सो ठीक है. सो विजन जो बार बार सब लोग ही बोल रहे हैं, विजन ऑफ द फाउंडर, विजन ऑफ द लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन अ डेमोक्रेटिक वे, टेकिंग टीम टुगेदर, because motivating one person is also very difficult that way, I will say, until unless you are not very passionate. But passion के साथ professionalism रहना भी बहुत जरूरी है. एंड मेरे एनजीओ में ऑनेस्टली मैं बताऊँ, सब लोग मुझे बोलते हैं, क्योंकि मैं 24 घंटा लगे रहता हूँ पागल की तरह, तो वो लोग बोलते हैं एक एक ऑन लाइटर वेन. एक मेरा एम्प्लॉय बोला है 2 दिन पहले, ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सो ही टोल्ड कि मुझे लग रहा है कि अगर मरना है तो मैं डिफेंस में जाके बॉर्डर में ना मरूँ, इनके साथ काम ना करके. तो सो सो दैट इज, बट आई टेल देम, आई एम श्योर जो भी मेरे साथ काम किया, दे हैव लर्न समथिंग. एंड आई बिलीव इन वर्क ओनली. सो आई एम ए वर्कहोलिक. एंड क्योंकि उसी से तो हम सीखते हैं. और प्रीचिंग करने से बेहतर है कि मैं काम करके दिखाऊं. पहला जिस दिन कोविड का शुरू हुआ, सोनी भी तब थी, सोनी यहाँ पे है, हमारे साथ सोनी थी तब. तो पहला दिन कुछ मेरा ग्रुप इंक्लूडिंग डॉक्टर, वो लोग बोले सर ये कोविड तो बोला बहुत फैल रहा है, कम्युनिटी में जाएंगे तो मर जाएंगे कोविड हो गए. तो फर्स्ट डे व्हाट आई डिड, फूड डिस्ट्रीब्यूशन. मुझे अभी भी याद है, रोहिणी का सेक्टर 23 एक स्लम में हम गए थे. तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच देयर, कि भाई मैं जाऊंगा, मैं खाना बांटूंगा, उसके बाद आप लोग जाओगे.
So obviously once I am there, then they work day and night. सोनी, पुष्पलता, जो जो हमारे साथ तब पूरा एक अलग टीम थे, उसमें से हम लोग एक दो लोग लोग हमारे साथ रहे भी नहीं है, और मतलब उनका डेथ भी हो गया, नॉट ड्यू टू कोविड बट आफ्टर सम इलनेस, फॉर सम इलनेस. सो लीडर को सामने से लीड करना है, चैलेंजेस तो है. रेजिंग, आई तो फील रेजिंग मनी, अनलाइक मैडम व्हाट सी टोल्ड, मुझे तो लगता है कभी कभी रेजिंग मनी फ्रॉम एनजीओ इज मच मोर डिफिकल्ट देन फ्रॉम ए बिजनेस. बिजनेस में लोग पैसा लगाते हैं, उनको दे नो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है उनके लिए कुछ, बट एनजीओ में पैसा अनलाइकली टू गेट रिटर्न अनटिल, एंड जो इम्पैक्ट की बात है ना, वो इम्पैक्ट बहुत टाइम लगता है. हमारा नोएडा में बच्चे को, जिसको हम 6 to 8 के बच्चे को पढ़ाते हैं अभी भी, नोएडा, रांची, दिल्ली में कुछ कुछ सीनियर सिटीजन का जोड़ के, जो दादू नाती का संबंध जो बोल रहे थे अभी सर, तो इनका तो डिविडेंड मिलते मिलते 10 साल लगेगा. सही बात है. तो 10 साल 12 साल बाद 6 to 8 पढ़ा लिए तो क्या हो गया. बट माई पर्पस इज कि आई वर्क ओनली ऑन 6 to 8 जस्ट टू डेवलप अ गुड पर्सनालिटी ऑफ दिस चिल्ड्रन, just to transfer the knowledge of elderly people, what experiential learning they have gathered in their lifetime. If I can transfer that to 6 to 8, this group of children who really want to learn, I can probably change their life. Thank you. Thanks for the Thank you so much. opportunity. I think at the end, it was very nice discussion. Many aspects we discussed, and I know that NGO is a sector, non-profit sector, or civil societies. The many things, even 5 days conference is a less time. There are many aspects which we can discuss, but definitely at the end, I just want to say that because being a social work department in a university, Amity University, and apart from that, as a social worker, I believe that definitely NGOs contribution and the people behind them, like you all, those who are, yeah, the founders, those who have vision, those who have created that entity, has plays a very important role. And I think that all those people, those who are, unsung heroes, or those who are not coming in limelight, should be acknowledged, should be, given recognition by various people, because I know that NGOs are doing great work, but somehow many people are give them different comments, but definitely their contribution for the society is great, and it should be acknowledged. And the youth, actually, those who are coming forward as, and those who are opting social sciences, social work, who are looking out their career in this sector, especially in CSR, in non-profit sector. So they should feel proud, where they are not only earning, but also they are serving the society. करियर के साथ सेवा में मेवा जो कहते हैं हिंदी में. So that is something which this profession gives to all. So I will motivate, I will request all the students and other participants, those who are watching us on LinkedIn and YouTube, that please take this momentum further. And this is one area where everyone should collaborate, because collaboration is something which NGOs first aspect is. So collaboration with universities, with like us. So definitely Amity University always collaborates with non-profit organizations in many ways, and they we provide lot of students, volunteers every time. And we also, I'm very soon planning to have a capacity building program for non-profit organizations, with the help of you all, so that we can strengthen, we can develop some projects together, and we can serve the society in a bigger way. And at the end, thank you so much, Sunil ji, Suman ji, and Prasun ji. Thank you I very know much. that Dr. Prasun is also, he said, "Okay, I will be there," Thank but you. he is working on some project. So definitely you are a workaholic person, and you have given this time. And Sunil ji is always, like a good friend and a brother. He always, is there whenever there is some guidance or some support is required. And Sumanji always, your chola bhaturas are still pending, so Yeah. definitely I'll visit soon in your office, and let's do something together.
on this day, at the end, not only this panel, but all the millions of NGOs, those who are working across the world in various ways, actually should be, salute to them, their contribution, sure, their acknowledgement. This is something which we should acknowledge their contribution. And this is just a beginning. I can say this discussion will lead to further outcomes also. So I will definitely be in touch with you all. If you have any suggestions, anything comes in your mind, we can definitely engage our students with your organizations, and for the betterment of the society. Thank you so much, Thank you very Thank you. much. Yeah. all Thank you. the Thank participants, you. those who have joined here. Yeah, Yeah. thank you. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank